श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री दामोदर अष्टकम्। सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः। विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकम्। वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशम्। निःस्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः। कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप। तृतीये निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा। पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधम्। सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं। लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। यशोदाभियोलूखले धावमानं। परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं। कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं। मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं। स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं। वरं देवदेहि स मोक्षावधिं वा। न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं। सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभैः। नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं। कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष। गृहाणे स मामज्ञमेवाक्षि दृश्यम्। कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ति च यद्व। त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ। न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने। तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै। नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः। विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत्। श्रीदामोदर देवार्पणमस्तु। सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः। विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकम्। वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशम्। निःस्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः। कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप। तृतीये निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा। पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधम्। सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं। लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। यशोदाभियोलूखले धावमानं। परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं। कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं। मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं। स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं। वरं देवदेहि स मोक्षावधिं वा। न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं। सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या।
मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभैः नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे स मामज्ञमेवाक्षि दृश्यम् कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ति च यद्व त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत् श्रीदामोदर देवार्पणमस्तु। सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकं वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशं निःस्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधं सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहि स मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभैः नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे स मामज्ञमेवाक्षि दृश्यम् कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ति च यद्व त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत् श्रीदामोदर देवार्पणमस्तु। सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकं वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशं निःस्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति
प्रीत्या दामोदराभिधं सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहि स मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभैः नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे स मामज्ञमेवाक्षि दृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ति च यद्व त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत् श्रीदामोदर देवार्पणमस्तु। सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकं वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशं निःस्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधं सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहि स मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभैः नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे स मामज्ञमेवाक्षि दृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ति च यद्व त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते
नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत्। श्रीदामोदर देवार्पणमस्तु। सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकम् वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशम् निःस्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधं सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहि स मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभैः नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे स मामज्ञमेवाक्षिदृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ति च यद्व त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत्। श्रीदामोदर देवार्पणमस्तु। सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकम् वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशम् निःस्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधं सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहि स मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह
इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभैः नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे स मामज्ञमेवाक्षि दृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ति च यद्व त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ प्रीतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत् श्रीदामोदर देवार्पणमस्तु। सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकम् वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशं निःस्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधं सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहि स मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभैः नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे स मामज्ञमेवाक्षि दृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ति च यद्व त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ प्रीतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत् श्रीदामोदर देवार्पणमस्तु। सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकम् वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशं निःस्वः सत्यव्रतो विप्रो
निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधं सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहि स मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभैः नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे स मामज्ञमेवाक्षि दृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ति च यद्व त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ प्रीतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत् श्रीदामोदर देवार्पणमस्तु। सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकं वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशं निःस्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधं सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहि स मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभैः नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे स मामज्ञमेवाक्षि दृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ति च यद्व
त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत् श्रीदामोदर देवार्पणमस्तु। सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यस्त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकम् वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारिराधदिवानिशं निःस्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृप तृतीये निसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधं सत्यव्रत उवाच नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलूखले धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यं वरं देवदेहि स मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभैः नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे स मामज्ञमेवाक्षि दृश्यं कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ति च यद्व त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने तथोरस्थ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नारद उवाच सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीलाचमत्कारो हृदये शनकैरभूत् श्रीदामोदर देवार्पणमस्तु।